हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो 23 नवंबर को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस डे इन हिस्ट्री, दैट इज 23rd of November, which are most important from the point of view of all the government exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, बिगिनिंग विथ 1897 when an Indian writer, commentator on culture, नीरज सी चौधरी was born. 23 नवंबर 1897 में भारतीय लेखक नीरज सी चौधरी जी का जन्म हुआ. नीरज सी चौधरी was born in East Bengal of British India, which is present day Bangladesh. He was a prolific writer even in the last years of his life. He published his last work at the age of 99. His masterpiece, The Autobiography of an Unknown Indian, put him on the long list of great Indian writers. याद रखिएगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन जो उनकी आत्मकथा है, इस श्रेष्ठ कृति के वजह से इनको महान भारतीय लेखकों में से एक माना जाता है. सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर अ पैसेज टू इंग्लैंड, द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, क्लाइव ऑफ इंडिया, हिंदुइज्म अ रिलीजन टू लिव बाय. He passed away 3 months short of his 102nd birthday in August 1999. अगस्त 1999 में इनकी मृत्यु हो गई. अब बढ़ते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट इवेंट की ओर जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. In the year 1912, a journalist, patriotic and an able writer in Bengali, Sakharam Ganesh Deoskar passed away. सखाराम गणेश जी का जन्म 1869 में मराठी परिवार में हुआ था. सखाराम गणेश देवस्कर was closely associated with Sri Aurobindo. He published a book titled Desher Katha, meaning Story of the Nation. This book described in exhaustive detail the British commercial and industrial exploitation in India. उन्होंने देशेर कथा नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका अर्थ है राष्ट्र की कहानी, जिसमें भारत में ब्रिटिश द्वारा की गई वाणिज्यिक और औद्योगिक शोषण के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है. This book had an immense repercussion in Bengal. It captured the mind of young Bengal and assisted them in the preparation for the Swadeshi movement. Desher Katha sold 10,000 copies in 4 editions within a year. The government of Bengal banned the book in the year 1910 and confiscated all the copies. बंगाल सरकार ने 1910 में इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी प्रतियों को जब्त कर लिया. Deoskar was the first to bring the name of Swaraj and Sri Aurobindo was the first to endow it with English equivalent independence. The nationalists adopted this word and Swaraj became one of the chief items of the nationalist program. Please remember that a question was asked on Desher Katha written by Sakharam Ganesh Deoskar in UPSC Civil Services Examination 2020. अगला महत्वपूर्ण घटना जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है वो है 23 नवंबर 1919 जब अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था. On November 23, 1919, All India Khilafat Conference was organized in New Delhi and later a Khilafat manifesto was published which called upon the British to protect the caliphate. Mahatma Gandhi was elected the president of the All India Khilafat Conference held at Delhi on November 23, 1919. अब खिलाफत मूवमेंट के बारे में संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं. This would take us back to World War I. During the First World War, Turkey had fought against the British. After Turkey's defeat, the Ottoman Caliphate was proposed to be dissolved. But Muslims regarded Sultan of Turkey as their caliph. Caliph मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख थे. To restore the caliph of Ottoman Caliphate, खिलाफत movement launch किया गया. The Khilafat movement, also known as the Indian Muslim movement, was a pan-Islamist political protest campaign launched to restore the caliph of Ottoman Caliphate. It was launched under the leadership of Ali brothers, Maulana Muhammad Ali, Maulana Shaukat Ali, Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan and Hasrat Mohani. ब्रिटिश सरकार को खिलाफत खत्म करने के लिए राजी करने के लिए महात्मा गांधी से भी समर्थन मिला.
It got the support of Mahatma Gandhi to persuade British government not to abolish the caliphate. The leaders of this movement accepted the non-cooperation movement of Gandhiji and led a joint protest against the British. Next important event is Geeta Dutt, a prominent Indian playback singer and a famous Hindi and Bengali classical artist, was born on 23rd of November 1930. She found particular prominence as a playback singer in Hindi cinema. She also sang many modern Bengali songs both in film and non-film genre. 1946 में उन्हें पहला ब्रेक मिला जिसमें उन्हें पौराणिक फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का मौका मिला. She is supposed to have sung over 1200 songs in Hindi films. In addition, she has sung songs in many Indian regional languages including Marathi, Gujarati, Bengali, मैथिली भोजपुरी एंड पंजाबी. उन्होंने नेपाली एवरग्रीन मूवी मैतीघर के गानों में भी अपना आवाज दिया है. Please take a note that postage stamps featuring Geeta Dutt were issued by India Post in the year 2013 and 2016. The next important event is 1937, 23rd November, when Sir Jagdish Chandra Bose, a pioneering scientist, passed away. To many in scientific community, Sir J.C. Bose is known as the pioneer in radio science. J.C. Bose was born on 30th of November 1858 in Munshiganj, Bengal Presidency, British India. His father was a member of the Brahmo Samaj and a deputy magistrate and assistant commissioner. अब ब्रह्मो समाज की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देती हूँ जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है. ब्रह्मो समाज was one of the most influential religious movements in India. ब्रह्मो समाज भारत के सबसे प्रभावशाली धार्मिक आंदोलनों में से एक था. It was started at Calcutta in 1828 by Rajaram Mohan Roy and Debendranath Tagore. Coming back to J.C. Bose, he invented the Mercury coherer, which is a radio wave receiver. This device was used by Marconi to build a radio. Bose was therefore a key figure in the invention of the modern radio and also in sonic technology. Bose contributed significantly to the development of remote wireless signaling. ये वायरलेस संचार और माइक्रोवेव उपकरणों के pioneers में से एक थे. Bose holds the first patent in the world for a solid-state diode detector used to detect electromagnetic waves. He is also the discoverer of millimeter-length electromagnetic waves. Acharya Bose was the first person to prove that plants feel pain and understand affection. इन्होंने ये भी साबित किया कि पौधे दर्द महसूस कर सकते हैं और स्नेह को समझ सकते हैं. He researched the seasonal effect on plants and also the effect of chemical inhibitors and temperature on plants. Therefore, he contributed significantly to agriculture as well. The next important event in this day in history is 1983 when 7th meeting of heads of government of Commonwealth of Nations was held in New Delhi. It was hosted by the country's then Prime Minister Indira Gandhi. Discussions were held on three major topics, that is American invasion on Grenada, the occupation of Namibia by South African and Cuban troops, and the nuclear rivalry between US and Soviet Union. अब राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन यानी कि Commonwealth Heads of Government Meetings के बारे में जान लेते हैं. The Commonwealth Head of Government is collective name for the government leaders of nations with membership in the Commonwealth of Nations. The Commonwealth of Nations, generally known simply as the Commonwealth, is a political association of 54 member states, nearly all former territories of British Empire. They are invited to attend Commonwealth Head of Government meetings every 2 years, with most countries being represented either by the head of the government or the head of the state. ये एक द्विवार्षिक बैठक है. The Commonwealth Head of Government meeting is a biennial summit meeting of the de facto leaders from all Commonwealth nations. It takes place every 2 years. चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा. देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस के सही आंसर्स दे सकते हैं. अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. एग्जाम्स में भी आप आसानी से आंसर्स मार्क कर सकते हैं. तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक देशर कथा? इज इट सखाराम गणेश देवस्कर और रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरबिंदो
और बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली या ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, which of the following books is not authored by Neeraj C. Chaudhary? Is it A, A Passage to England, B, The Intellectual in India, C, Clive of India, या ऑप्शन डी अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्टेड द 7th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इन 1983? इज इट ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ऑप्शन बी महातिर बिन मोहम्मद, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी चरण सिंह। विद दीज क्वेश्चंस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।